Hello, good morning, friends. Today is 21st of December 2023. In this video, we are going to analyze Forex and precious metals market. और ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में होगा, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश for the greater reach of learners audience. ये वीडियो largely is for Rainbow Setup users, but if it's helping you, don't forget to like and subscribe. बट रिमेंबर एक थिंग कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग इटसेल्फ बहुत ही रिस्की बिजनेस है। कोई भी पैसा लॉस कर सकता है, मेजोरिटी लूज मनी इन दिस बिजनेस। सो इसमें बेस्ट जो प्रैक्टिस होता है उससे खुद का सुन के ट्रेड करना rather देन लिसनिंग टू एनीवन एंड ट्रेड। तो अगर लिसन करके ट्रेड करना है तो बेस्ट आप यू गो टू म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स वेयर स्पेशलाइज्ड फंड मैनेजर्स हैं जो आपको इन्वेस्ट करने देंगे। इवन आप लीगली थ्रू लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम उसके जरिए इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको कभी आप चाहे कि क्रूड ऑयल शॉर्ट, बट दैट यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो वो कीजिए जहां पे एक्सचेंज डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मोर ऑफ अ पैसिव। और या फिर म्यूचुअल फंड कीजिए जहां पे एक्टिव मैनेजर आपके बिहाफ पे मार्केट पे पार्टिसिपेट करेगा एंड विल ट्राई टू जनरेट अ हायर रिटर्न। So anyway, let's focus on us. Let's watch the program. We'll look at the dollar index. We'll start with the dollar index here and we'll analyze to the fountain of gold. उसके लिए दो सेटअप मुझे लाना होगा, एसडी रेनबो वेव वर्जन 1 और एसडी आरएसआई एक्स। सो एसडी आरएसआई एक्स जो है वो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। दिस इज हियर द एसडी आरएसआई एक्स विच इज गिविंग अस अ डिटेल रीडिंग ऑन द मोमेंटम, and here is the SD Rainbow Wave version 1 which has a relative strength meter. तो सबसे पहले चलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर पे चलते हैं। डॉलर इज डाउन कंपेयर टू यस्टरडे, इट हैज लॉस्ट स्ट्रेंथ टुडे। यूरो इज इंटरेस्टिंगली डाउन टू इन स्ट्रेंथ डिस्पाइट द वीकनेस इन द डॉलर। रिलेटिव स्ट्रेंथ के टर्म्स में यूरो इज नॉट द वन स्ट्रॉन्ग टुडे। पाउंड इज डेफिनेटली नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज डाउन -2.7 पॉइंट उसका स्ट्रेंथ लॉस हुआ है। JPY is the strongest one. Yen is the strongest one. INR is also down, almost in line with the dollar index. Dollar index और INR particularly similar direction पे move कर रहा है अभी के लिए। गोल्ड इज अप, गोल्ड में बिड मिल रहा है 1.2 कंपेयर टू बाकी जो सारे बास्केट उसके अगेंस्ट गोल्ड इज अप। And silver is the top performer with Japanese yen. Japanese yen or silver, these two remain the top performer. But if we look at the relative strength cut trend, it is basically rising for the dollar, for the euro, and falling for pound, yen, INR, rising for gold and silver. So let's look at the relative strength compared to लास्ट फ्राइडे। सो लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट हैज बीन द silver, while weakest have been the Japanese yen. That means Japanese yen strength that we are seeing is basically a bounce back or a little change or a retracement from the previous trend we have seen, that yen has been weakening, now it is bouncing back. Pound is steadily weakening. Pound has been weak, it is weak again. So relative strength के मामले में pound is weak, whereas euro has lost marginal strength, relative strength, but overall since Friday it is strong. So the strongest performer since last Friday has been the silver, is the gold, and the euro, while other currencies did not do very well. Now let's come back to the dollar index. Dollar index, you can see it's in the bearish control overall, but तगड़ा bearish control है नहीं। Among the 12 factors के बीच में सिर्फ 7 फैक्टर ही बियर के साथ है, साथ में 2 फैक्टर है बुल के साथ। तो बुल ट्रेड तो वैसे भी सोच नहीं रहे, दिस इज मेजोरिटी बियरिश के कंट्रोल में है।
सो 7 फैक्टर बियर के साथ, 2 फैक्टर बुल के साथ और 3 फैक्टर न्यूट्रल। तो हो गया ये बियरिश रेंज काइंड ऑफ मार्केट। सो डाउन साइड प्रेशर डॉलर इंडेक्स में रहेगा, और बट दैट विल बी अ रेंजिश काइंड ऑफ मूवमेंट। डॉलर इंडेक्स को जो वीकनेस जिसने फ्यूल किया है, दैट इज द फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व 2023 इट कंटिन्यूड टू रेज रेट्स। फिर जुलाई के बाद से इन्होंने कोई रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया। सिंस अबाउट October around, I started talking about next move is going to be interest rate cut, because historically Fed जब continuous 5 months is did not increase rates, then very likely the next cut, next happening usually the interest rate cut. So interesting projection 2024, ये EN macro micro का वेबसाइट है, बहुत ही यूजफुल वेबसाइट फॉर मैक्रो एनालिसिस। एंड अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, यू गेट अ वेरी स्पेशल ऑफर फ्रॉम देम। I don't have any kind of financial relation with them, but I have definitely cordial personal relationship with them. So it's really an awesome website. But if you're my student, don't, and if you're interested in this website, don't forget to use the coupon where your cost will come down way more than 60%. So here is an interesting projection for the 2024, जो डॉलर को फ्यूल कर रहा है कि फेड ने हिंट दे दिया। मार्केट इज एक्चुअली करंटली प्राइसिंग 625 basis points of interest rate cut by the Federal Reserve before December 2024. So next year, market is pricing 150 basis points rate cut from the Federal Reserve. वही नहीं, it is expecting from March onwards, Fed is going to cut 25 basis points at every meeting till the November. November is also when we have the US election. So this is the projected path, or interestingly, 150 basis points, such a sharp rate cut has always coincided with a US recession and market crash. I'm not predicting anything. This is as per history. So as per history, such a level of drop in cut and fast has usually been associated with a recession or a market crash. So a pretty interesting projection by the bond market, federal funds rate market. So pretty interesting projection from there. So वो डॉलर का वीकनेस को इट इज फ्यूलिंग अप। डॉलर हैज रीच, ये जो ट्रेंच बॉटम का सपोर्ट है वो रीच कर गया है डॉलर। इफ आई ब्रिंग द कैंडल, इट हैज ऑलमोस्ट रीच देयर। सो थोड़ा कंसोलिडेशन टुवर्ड्स अ बियरिश प्रेशर, यही डॉलर का बेसिक थीम है। तो प्रॉब्लम नाउ द थिंग इज कि ये डॉलर इंडेक्स तो इंडिया में ट्रेड नहीं किया जा सकता, तो इसको जो बाहर है वो डायरेक्ट डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं। बट इंडिया में देन हाउ टू शॉर्ट डॉलर, किसके अगेंस्ट डॉलर को शॉर्ट करें, तो चलिए देखते हैं। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी बुलिशनेस दिखा रहा है, बट वंस अगेन इट्स अ बुलिशनेस विद अ कंसोलिडेशन। रिलेटिव जो मोमेंटम है, दैट मोमेंटम इज ग्रेजुअली गोइंग डाउन। सो मार्केट बुलिश रहते हुए भी 68% बाय विन प्रोबेबिलिटी, 8 factors are bullish, only 2 are bearish, and 2 neutral. So euro looks little more bullish, but today there is a red cap, so it's basically a consolidation sort of going on in euro USD. और euro USD अभी इसका बढ़ना, it should go up, and since dollar is down, so and will further drop, so euro can go up. But the problem with the euro is, with European inflation dropping, now market has started pricing significant rate cuts from European Central Bank as well. Now, if Fed is cutting rate and ECB is cutting rate, then the policy divergence जो trending trades के लिए beautiful है, तो फिर that part is now gone. So we'll have to see how it goes. I'm holding some very small positions into this one, not because, of course, because of the mixing, but
also because it's a holiday season approaching. So I'm ready to give up on the some of the profits, but I'd like to hold the euro because I think euro has further possibility to go up. So I'll continue to hold some quantity. I may increase into also this one. So euro, I'm still a bit on the bullish side. But this policy that ECB interest rate cut pricing is now a headache. I'll be carefully judging how that is changing central bank policy divergence theme. So that is one thing I'll keep a check on. Second is I'll keep a check on the Russian situations as well on the Ukrainian border. Though market is no longer focusing on that, but there is a possibility, and I'll keep a check on the European storage on the natural gas inventories. So that is where I will keep a check on for the euro. जी नेक्स्ट यूरो के साथ साथ चलिए यूरो इसको 125 मिनट्स में भी एक बार देखेंगे. सो 125 मिनट्स इट इज यू कैन सी इट इज डाउन. सो बाई के लिए तो बिल्कुल ही रेडी नहीं है और बड़ा ट्रेंड सिंस इज ब्रॉडली बाय इट्स नॉट रेडी फॉर सेल येट. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तगड़ा सपोर्ट्स आ रहा है यहाँ. सो एंड यहाँ पे एम्प्टी लाइन का सपोर्ट आ रहा है. सो इट्स नॉट रियली बियरिश, इट्स नॉट रियली बुलिश. I think it has moved to the holiday mode. Then we have GBP USD. GBP USD is more weak, much weaker than the Euro USD. तो ये पेयर सही नहीं होगा डॉलर को बेचने के लिए. सो डॉलर शॉर्ट के लिए दिस इज रियली नॉट द राइट पेयर. यहाँ पे कल एक डेटा रिलीज हुआ था. मैं अभी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का वेबसाइट देख रहा हूँ. ये इन्फ्लेशन डेटा. Inflation declined sharply, the headline inflation. The core inflation also declined quite good. So market is now started pricing a possibility of rate cut from Bank of England as well. So central bank का divergence theme इसमें भी चला गया है. So now that's a problem कि हम लोग GBP USD को लॉन्ग करें. So ये पेयर मोर अच्छा होगा कि we remain on the sideline to see how things are changing. 125 minutes में जो है हम लोग सेल के साइड ये ब्रेक आ रहा है. दिस इज प्रो ट्रेंड ट्रेड. अगर ये ब्रेक कंप्लीट हुआ then this can be a short opportunity in GBP USD where it can come down towards 1.258 to 1.256. So further a bigger drop than this currently project नहीं कर पा रहे हैं. So अगर छोटा quantity kind of play करना है, this can be a possible trade. Once it starts closing, अगर इसने इसके नीचे close कर दिया, then this level 1.265 will start acting as strong resistance. तो इसके साथ साथ हम लोग जिसमें जाएंगे दो पेयर यूरो INR और GBP INR. सो यूरो INR में आई एम सीइंग दिस बुलिशनेस इज देयर. जो रेड कैप्स यूरो USD में था यूरो INR में प्रेजेंट है नहीं. मार्केट बुलिश है. बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी 71%. बट ठीक से अगर मोमेंटम को देखेंगे इट इज अ डिक्लाइनिंग मोमेंटम. सो आई डोंट थिंक इट्स अ चेंज इन ट्रेंड, रादर इट कुड बी द हॉलीडे टाइम कमिंग अप इफेक्ट. सो इसमें बुलिश रह सकते हैं बट I'll rather add more to the 91.54 के break पे. But some position on the euro long we can definitely remain. But it's really not a great market to be long. Volatility down रहेगा. Let's come down to 125 minutes. इसमें sell signal available है. So इसमें मैं ये sell के लिए बिल्कुल है, मतलब सुपर्ब नहीं है. यहाँ पे सपोर्ट 91.5, सपोर्ट 90.87, सपोर्ट 90.78, बट द सेल कॉल इज प्रिवेलिंग. सो रैदर इसको लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे आप ऑल्ट ए और उसमें जाके रेनबो बाई सिग्नल प्लेस कर दीजिए. सिमिलर यूरो USD में भी 125 मिनट्स में गो टू 125 मिनट्स, क्लिक ऑल्ट ए, select rainbow wave version 1 and place the rainbow buy signal.
उसके बाद देखेंगे कि क्या कहाँ इफ इट्स अ गुड बाय और नॉट। फिर हम लोग चले आते हैं जीबीपी INR में। लेट्स लुक एट जीबीपी INR इन डेली चार्ट। वंस अगेन अ मिक्स मार्केट, neither bullish nor bearish. Buy trade win probability 46, sell trade win probability 21, projected win probability 3 factor with the bulls, 7 factor with the bears, 2 factor neutral. So broadly bear का weightage भारी होते दिख रहा है, और अगर ये opposite side move करने लगा then it can definitely come down towards 103.7, 103.25, 103.48 and 103.15 area. So these are the levels. Let's look at 125 minutes GBP INR. हाँ, थोड़ा bearish के तरफ clearly tilted है। 125 minutes में rather bears काफी strong है। 10 factors are with the bears, 0 factor with the bulls, only 2 are neutral. So यहाँ पे अगर किसी को बेचना भी है, the major stop loss maximum could be this one. Rather preferred is this one. Pound should not go now, go below or start to go below 105.35 on basis of closing. 125 मिनट का कैंडल में कोई भी क्लोजिंग पे बियॉन्ड इसके ऊपर जाने लगा, and in the next candle immediately no selling is beginning, then definitely it's a consideration to exit, and this is the maximum exit stop loss. In case of selling, our max stop is currently 105.41. मैं रेनबो वाला स्टॉप मेंटेन करूंगा। मैं आउटलुक चेंज की बात कर रहा हूं। अनलेस दिस वन गोज अप वी कैन नॉट बी बुलिश। सो JPY INR इज नेक्स्ट। ये ना स्ट्रॉन्ग है, इट्स बेसिकली जो डाउन मूव हमने देखे, इट्स अ ब्रेक, इट्स अ गुड ब्रेक। सो JPY INR जिनका आउटलुक ब्रॉडली हम लोग का बुलिश है, बिकॉज यहाँ पे वो थीम प्ले होने का चांस है जो यूरो, GBP और में मिसिंग है। जापानीज USD मीन्स जापानीज सेंट्रल बैंक is very likely to raise interest rate, whereas the other central banks are planning to cut rates. It is talking dovish, but it is underlying the theme. It is preparing for a policy change. Because very likely Japan is now experiencing a level of inflation it has not seen. So basically, even if the central bank wants to keep its policy easy, it at least would now want to ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको बंद करना। तो उसका पहला स्टेप होगा कि मूविंग इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड 0, मतलब अभी नेगेटिव है, विल गो टू द पॉजिटिव लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो यहाँ पे दैट इज कैन बी अ बुलिश फैक्टर फॉर जापानीज येन एंड इंडियन रुपी। So also it is can be a USD JPY shorting factor in the coming days. So 3 green socks के बाद एक full red candle can be considered a point of entry, but we need a close. एक closing चाहिए यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के साथ, बट यहाँ पे काफी सारे कमबैक्स है, तो इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग के लिए। और भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बेचेंगे यहाँ पे द लेंथ ऑफ द कैंडल has fallen, which means overall strength of the bear has fallen despite a full red candle. So 125 minutes में देखते हैं, काफी टाइम से वीकनेस दिखाना चालू हो गया मोमेंटम के बेसिस पे। Yes, it is further going down. So USD JPY can be shorted. This will act as an important support area, जो 142.5. But overall theme wise USD JPY can go down. But once again we are approaching the holiday season, so the move can remain erratic. So position ज्यादा लेने से थोड़ा position लेके देखते रहना बेहतर होगा, because this can be a theme change trend and it can go for quite some time.
quite for some months and can give very good return for 2024. So इसमें कुछ हरी नहीं करना चाहिए. यूएसडी जेपी हुआ, सॉरी यूएसडी आईएनआर, जो मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता हूँ. आई डोंट लाइक यूएसडी आईएनआर बिकॉज ऑफ आवर Reserve Bank of India's direct intervention in the pair. So it is basically trying to break this flat zone 83.15, whereas the next flat zone is 83.34. So broadly, it can now spend time in this area when it's middle 83.25. So at this point, you can think about selling 83.5 call, and here 83.25 put, kind of a straddle, but I don't recommend any kind of option trade. मैं खुद नहीं करता हूँ option trade ये USD INR का, मुझे पसंद भी नहीं. Rather future with Euro INR, GBP INR, JPY INR, they give much higher return compared to the risk. तो overall market जो है sell में है. So we can further see once this breaks down this level, that will be interesting. So if anyone wants to speculate like some big changes happening in the USD INR, कोई speculative idea करेंगे तो idea मेरा रहेगा put की तरफ. तो buy, क्योंकि buy side RBI is there. RBI does not mind कि rupee going down, but RBI definitely minds volatility on the higher side. RBI does not direct intervene, it cuts down the volatility both sides, but it cuts the volatility more on the upside. इसका preference for, क्योंकि rupee को broadly it wants to prevent going up too fast. So if it breaks, definitely further game will be 82.8, this level. And if it's a sharp change in USD INR, then we'll be looking at 82.56. So any kind of speculative buy position इस पे, माने buy put position इस पे डाला जा सकता है, but this is very speculative and I do not recommend trading on anybody's recommendations. So rather यहाँ पे एक alert डाल दीजिए 83.06 पे, वहां पे definitely try कर सकते हैं. This breaking levels are very important, so definitely something उस पे try किया जा सकता है. नेक्स्ट विद द करेंसीज डन, हम लोग जो इसके साथ देखते हैं वो है गोल्ड सिल्वर, और वी यूज द इंटरनेशनल चार्ट. मार्केट इज जस्ट ओपनिंग अप, सो ऑलवेज गिव सम टाइम टू द मार्केट. गोल्ड में बाई साइन प्रिवेल होने से आई हैव बॉट सम क्वांटिटी, बट वंस अगेन नॉट मच, वेटिंग बेसिकली फॉर दिस ब्रेक. सो लेट्स गिव एन अलर्ट क्रॉसिंग अप. So this break के बाद we can further add quantity on the XAU USD or the gold. So currently any kind of quantity on the buy side should be small. इसमें अभी भी देखिए background is yellow, means short trend is more of a neutral. So तगड़ा अभी बोल नहीं सकते कि इसमें strong buying चल रहा है. But overall yes, it's if we look at the long term chart कि for investment, gold is in a range waiting for a break. This is a monthly breakout which is gold is attempting. So gold has opportunity for an investor. But as a trader's point of view, यहाँ पे गोल्ड को देखिए कि it's a buy signal, but it's a not strong one. कि हम लोग जो traders है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बीज इसका इस्तेमाल करते हैं. सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक इशू भी चल रहा है जो 22 को खत्म हो जाएगा. Don't forget to subscribe to that. It's quite a good investment for over the long period कि जो आपको wealth को protect करेगा. So now coming to market is now opening up gradually. Now last counter we want to look at is the XAU USD. So it's prevailing on the above. It's remaining somewhat bullish in the 125 minutes. Though buy trade win probability is still projected probability is low, 50%. Consolidation probability is quite high, 43%. But 7 factors are bullish, 3 factors bearish. So it is missing the momentum.
So जब momentum आ जाता है, you can think about going long on silver. Now ये previous day से compare करेगा. It was comparing from Friday, this meter. It will now change. I've changed it to previous day. So today silver overall strength is, it has opened up. It's more of a volatile. In 125, it's falling. Yen has been on the rise, but 125 minutes, it is showing some weakness. So XAG USD now come back to the daily chart. Daily chart mein, I don't think it's a superb ready to go for buy. This is the first time a buy signal is getting generated. In 125 minutes, we have seen that it is lacking momentum. So once the momentum comes up, this can be a good opportunity to go long in silver. So first, jo major hindrance silver ko hai, that is the 25.26 area, whereas this area 23.7 will act as support. और जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे चेंज होते जाएगा, वी विल ट्राई नॉट टू ब्रीच दैट. सो और हॉलीडे सीजन को दिमाग में रखते हुए नो बिगर पोजीशंस. देखिए बैकग्राउंड चेंज हो रहा है. सो इट्स रियली सिल्वर इज नॉट रेडी, बट वी कैन वेट फॉर द क्लोजिंग्स बिकॉज 11:30 बजे, सॉरी 11:55, अभी तो विंटर है, तब तक MCX मार्केट खुला रहेगा. सो since silver is showing some strength, so MCX में एक बार silver को देखते हैं if we are looking at the similar kind of strength or not. तो MCX silver के लिए हम लोग चूज किए हैं सिल्वर मिनी, और सिल्वर मिनी में ये देखिए बाय सिग्नल आ रहा है. सो वी नीड टू वेट फॉर द क्लोजिंग टू सी कि बाय सिग्नल प्रिवेल कर रहा है कि नहीं. यहाँ पे ऑपोजिट सिचुएशन है. यहाँ पे रेजिस्टेंस है 75,982, ऊपर रेजिस्टेंस काफी पास है 76,434. तो रैदर सिल्वर मिनी से बेहतर मुझे सच में लग रहा है सिल्वर XAG USD, जो इंटरनेशनल सिल्वर. तो MCX में अगर जो मेरे स्टूडेंट्स है, यू नो हाउ टू क्रिएट द XAG USD, you want to go long on silver, you know the calculation, silver mini, and you want to short the USD INR. So do that, and I think that's a better chance. You can go for some silver MCX extra exposure, but this is a strong level. Plus, obviously, we have the double top level. So it's not a smooth ride. Maybe USD INR will drop fast. So that is what we speculate on. That can be a one trade. If USD INR drops fast, means INR becomes strong, then the silver MCX will not rise that much compared to international silver, which is XAG USD. So इसमें definitely देखते रहना चाहिए कि any opportunities coming up or not. So I hope this video helps you. And if this video you are liking, then don't forget to subscribe and like this video. और I hope ये रेनबो सेटअप के साथ आप लोगों का ट्रेड अच्छा जा रहा है, मेरा भी अच्छा जा रहा है. तो ये हॉलीडे सीजन में खुद पे काम करना मत भूलिएगा. rather than trading, this time we spend to improve ourselves. So all the best from my side, and happy trading. And all the best, and happy for this holiday season jo aa raha hai. I wish you all the best and all the happiness.